नमस्कार मित्रों। कम्युनिकेशन टुडे और भारतीय विद्यापीठ के संयुक्त तत्वावधान में संचालित की जा रही इस वेबिनार श्रृंखला की 125वीं कड़ी में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि जो हमारे मित्र नियमित रूप से इस श्रृंखला के साथ जुड़ रहे हैं, उनको विदित है कि कम्युनिकेशन टुडे जयपुर से पिछले 28 वर्षों से, इस वर्ष इसका ये 29वां वर्ष है प्रकाशन यात्रा का, तो पिछले 28 वर्षों से ये नियमित रूप से प्रकाशित हो रहा है क्वार्टरली बाइलिंगुअल जर्नल के रूप में। कम्युनिकेशन टुडे के माध्यम से हमने प्रयास किया है कि मीडिया और उससे जुड़े हुए विभिन्न जो क्षेत्र हैं, फिल्म, रेडियो, टेलीविजन, पब्लिक रिलेशंस, डिजिटल मीडिया, फोक मीडिया इत्यादि, उन क्षेत्रों में हो रही शोध अनुसंधान को हम एक व्यापक पाठक वर्ग तक, मीडिया कर्मियों और मीडिया के विद्यार्थियों तक पहुंचाने का परिश्रम करें। 28 वर्ष के सारे अंक जो हमारी वेबसाइट है communicationtoday.net, उस पर अपलोड कर दिए गए हैं। जो भी इच्छुक विद्यार्थी हैं मीडिया के या अन्य विषयों के, वो उस वेबसाइट पे जाके इन अंकों को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब तक 2 डिसर्टेशंस कम्युनिकेशन टुडे के इस योगदान पर हो चुकी है। अलग अलग विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों ने ये प्रस्तुत किया था। 2007 में चंडीगढ़ में PRCI पब्लिक रिलेशंस काउंसिल ऑफ इंडिया के नेशनल कन्वेंशन में कम्युनिकेशन टुडे को एक्सटर्नल कैटेगरी में गोल्डन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। ये हमारी विनम्र यात्रा, जिसमें अब तक 11 विशेषांक हम प्रकाशित कर चुके हैं। मीडिया एजुकेशन इन इंडिया, मीडिया एजुकेशन क्रिटिकल थॉट, मीडिया एंड कोविड, डिजिटल मीडिया आदि आदि। और भारतीय विद्यापीठ आईपी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड दिल्ली की एक ऐसी प्रमुख राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थान है जिसने मीडिया के साथ साथ इंजीनियरिंग और अन्य अनुशासन से जुड़े हुए विषयों पे अपनी एक विशेष पहचान बनाई है। पिछले वर्ष मुझे जाने का अवसर मिला एक सेमिनार में यहाँ, तब तक उस समय जो निदेशक अभी भी हैं वहाँ, प्रोफेसर MN हुडा जी, जो किन्हीं कारणवश हमारे साथ आज नहीं जुड़ सके हैं। हुडा जी ने यह प्रस्ताव रखा था कि क्यों नहीं कम्युनिकेशन टुडे और भारतीय विद्यापीठ के संयुक्त तत्वावधान में श्रृंखला को आयोजित किया जाए। उसी सोच का ये परिणाम है कि हम 100 वेबिनार के बाद भारतीय विद्यापीठ से जुड़ते हैं और उनके इस तकनीकी और अकादमिक सहयोग के साथ हमने इस यात्रा को एक तरह से आगे बढ़ाया है। आज हमारे साथ भारतीय विद्यापीठ का जो स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन है, उसके सहायक प्रोफेसर जयंत राठी जी भी हैं। और आज जिस विषय पर हम बातचीत कर रहे हैं वो है रिसर्च एंड पब्लिकेशन एथिक्स, और इस विषय पर हमारे साथ संवाद करेंगे हमारे अभिन्न आत्मीय मित्र प्रोफेसर अनिल मेहता। अनिल जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे इस 125वीं कड़ी में। 125वां अपने आप में ये जो आंकड़ा है ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तो इसमें हम सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं ई बुके से। जिस तरह से फूलों की खुशबू दिग दिगांतर में फैलती है और एक आह्लाद और प्रसन्नता का भाव संचारित करती है, हमारा भी एक ये जो विनम्र प्रयास है कि इस अकादमिक आयोजन के माध्यम से, इस विचार यज्ञ के माध्यम से विचार रूपी नवनीत की खुशबू दिग दिगांतर में प्रसारित करते रहें। आप जैसे विशेषज्ञों के साथ मिलकर के मीडिया और उससे जुड़े हुए विभिन्न विषयों पर इस संवाद की निरंतरता को जारी रखते हुए, तो हमें विश्वास है कि ये जो प्रतीकात्मक ई बुके आपको आज भेंट किया गया है, ये कहीं ना कहीं हमारी उन भावनाओं के माध्यम से समाज में एक वैचारिक चेतना जागृत करने की दिशा में अपनी महती भूमिका निर्वाह कर सकने में हम सक्षम होंगे। प्रोफेसर अनिल मेहता देश भर में एक ट्रेनर के रूप में भी
चर्चित हैं, विख्यात हैं, जो मूलतः है आपकी जो पारी है वो व्यावसायिक प्रशासन विभाग में राजस्थान विश्वविद्यालय में, जहां मैं भी इन्हीं के साथ लंबे समय तक अध्यापन करता रहा जर्नलिज्म डिपार्टमेंट में, और संयोग से हमारा विभाग भी पास पास था, तो इनके साथ निरंतर विचार विमर्श विभिन्न मुद्दों पर, विषयों पर होता रहा है। तो अनिल जी ने मूलतः लगभग 4 दशक तक राजस्थान विश्वविद्यालय के व्यावसायिक प्रशासन विभाग में अध्यापन कार्य किया, और विश्वविद्यालय के वरिष्ठ प्रोफेसर के रूप में हमारी अनेक जो अकादमिक निकाय हैं, एकेडमिक काउंसिल, सेनेट इत्यादि के साथ जुड़े रहे। 5 ईयर लॉ कॉलेज जो हमारे विश्वविद्यालय में अभी कुछ वर्ष पहले स्थापित हुआ था, वहां के आप डायरेक्टर के रूप में भी आपने 3 वर्ष तक सेवाएं दी, और लीगल एजुकेशन को भी एक तरह से बेहतर बनाने की दिशा में आपका योगदान महत्वपूर्ण रहा है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर स्किल डेवलपमेंट, उसकी स्थापना में भी आपका योगदान रहा, और आपने अपने सेवा काल के लगभग अंतिम चरण में इस महत्वपूर्ण सेंटर की वहां पर स्थापना की थी। राजस्थान विश्वविद्यालय का एक प्रतिष्ठित संस्थान है पोद्दार प्रबंध इंस्टीट्यूट, पोद्दार प्रबंध संस्थान, इंस्टीट्यूट ऑफ पोद्दार मैनेजमेंट। वहां भी आप लंबे समय से प्रबंधन से जुड़े हुए विषयों पर कक्षाएं ले रहे हैं। अपने विषय से संबंधित आपकी 1 दर्जन से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, और शोध पत्र अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाएं हैं उनमें प्रकाशित हुई हैं। देश में आयोजित अनेक सेमिनार्स में आपकी सक्रिय सहभागिता रही है। विषय से जुड़े हुए अनेक व्यावसायिक संगठनों के साथ आपका सक्रिय जुड़ाव है। उनके ऑफिस बेयरर्स भी हैं, वो बहुत लंबी व्याख्या हो जाएगी मैं यदि एक एक का नाम लूंगा, लेकिन उनके ऑफिस बेयरर्स के रूप में भी आप शोध अनुसंधान के क्षेत्र में निरंतर अपने विद्यार्थियों को, शोधार्थियों को मार्गदर्शन देते रहते हैं। इन संस्थाओं के माध्यम से जो ऑनलाइन एक्टिविटीज की जा रही है, विशेषकर कोविड काल में और कोविड के बाद, उनमें भी आपकी सक्रिय उपस्थिति रही है। जयपुर का तो मेरे ख्याल शायद ही कोई ऐसा इंस्टीट्यूट होगा जहां पर आप प्रबंधन और व्यक्तित्व विकास से जुड़े हुए मुद्दों पर प्रशिक्षण कार्यशालाएं आयोजित न कर सके। लगभग सभी निजी विश्वविद्यालयों, निजी कॉलेजों और हमारे विश्वविद्यालय के संगठक कॉलेजों में आपकी सक्रिय उपस्थिति, चाहे प्रभावी वक्तृत्व कला की बात हो, चाहे नेतृत्व विकास की बात हो, चाहे जीवन में खुशी का एहसास करने के तौर तरीके हों, चाहे समय प्रबंधन की बात हो, ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं, क्षेत्र हैं जहां आपने अपने परिश्रम से इस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स डेवलप किए हैं। राजस्थान पुलिस का जो इंस्टीट्यूट है, वहां भी आपने पुलिस कर्मियों को ट्रेंड किया, LIC के कर्मचारियों को ट्रेंड किया, बैंक ऑफिशियल्स को ट्रेंड किया। तो अलग अलग क्षेत्र में कॉर्पोरेट की दुनिया के साथ साथ एकेडमिक संस्थाओं के साथ भी आपकी सक्रियता बराबर जुड़ी रही। कम्युनिकेशन टुडे के इस मंच पर पूर्व में भी आप आ चुके हैं, और एक्सपर्ट के रूप में इफेक्टिव स्पीकिंग और कुछ अन्य विषयों पर आपने संबोधित किया है। आज का जो विषय मैं जब आपसे चर्चा कर रहा था, अभी कुछ दिन पूर्व आप एक विश्वविद्यालय में गए थे, और जब मेरी इनसे बात हो रही थी, जब इन्होंने इस विषय का जिक्र किया, तो मुझे लगा ये वो विषय बहुत महत्वपूर्ण है आज के संदर्भ में। रिसर्च एंड पब्लिकेशन एथिक्स। हम लोग जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं, किसी भी अकादमिक संस्थान से जुड़े हुए हैं, उनके लिए शोध तो अनिवार्य है ही। अपना करियर के को अपडेट करने के लिए, प्रमोशन के लिए, एक संकाय सदस्य के रूप में, शिक्षक के रूप में अपने करियर को विकल्प के रूप में लेने के लिए भी हमें शोध अनुसंधान में जुड़ना पड़ता है। PhD की डिग्री प्राप्त करनी हो, शोध पत्रों का प्रकाशन हो, ये एक बहुत बड़ा संसार है, और समय समय पर इसको लेकर के UGC और अन्य जो नियामक संस्थाएं हैं, वो भी कोशिश करती रही हैं कि हम एक गुणवत्तापूर्ण शोध की आधार भूमिका तैयार करें। जिस तरह से देश में PhDs हो रही है, अनिल जी से मेरी अक्सर बात होती रहती है, जो हाल है उनसे कहीं ना कहीं हमें असंतोष भी होता है। चाहे वो शिक्षार्थी मात्र डिग्री प्राप्त करने के लिए रिसर्च कर रहे हैं, या वास्तव में ज्ञान विज्ञान के नए क्षेत्रों को उद्घाटित करने के लिए, उसके प्रति एक समझ पैदा करने के लिए, एक गंभीरता के साथ, संवेदना के साथ
वो शोध कार्य को कर रहे हैं। दुर्भाग्य से दुनिया के संदर्भ में यदि हम बात करें तो हमारे देश में संभवतः 1% भी जीडीपी का खर्च नहीं होता है शोध पे, जहां इसराइल जैसे छोटे से देश में 4% से अधिक शोध कार्यों पर खर्च किया जा रहा है। तो एक बहुत बड़ी चुनौती है विश्वविद्यालयों की, विशेषकर चाहे वो स्टेट कहिए चाहे प्राइवेट कहिए, लगभग सभी जगह हाल यही है कि बहुत अधिक संतोषजनक स्थिति नहीं है, ना रिसर्च का बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। ऐसी स्थिति में जो हमारे सामने चुनौतियां हैं, और फिर जिस तरह से आलेखों के प्रकाशन की अनिवार्यता निर्धारित की गई है आपके प्रमोशन में और चयन में, और जिस तरह से अंक निर्धारित किए गए हैं, वहां उसने नए तरह के एक बाजारवाद को जन्म दे दिया है। तो शोध के ऊपर ये बाजारवाद का जो आक्रमण हुआ है, ये भी मुझे लगता है कि बहुत घातक है। लेकिन ये जो स्थितियां हैं हमारे सामने हैं, इसमें हम किस तरह से वस्तुनिष्ठता के साथ, ईमानदारी के साथ, प्रामाणिकता के साथ, बिना किसी पूर्वाग्रह के, बिना किसी हितों के टकराव के, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, किस तरह से अपनी शोध को बेहतर बना सकते हैं। वो क्या नैतिक सिद्धांत है, नैतिकता क्या उचित अनुचित है। कुछ नैतिक मूल्य विरासत से मिले हैं, कुछ समय के समय सापेक्ष में हम एक्वायर करते हैं, परिवर्तन होते हैं जो हमारा वर्तमान परिवेश है उसके अनुरूप। लेकिन क्या उचित है क्या अनुचित है, इसकी समझ पैदा करना, और इस अकादमिक जो एक इंटीग्रिटी है, अखंडता है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। जो एकेडमिक डिसऑनेस्टी है, शैक्षणिक कदाचार है, वो हमारी पूरी शैक्षणिक व्यवस्था के लिए एक कलंक साबित होता है। तो दोस्तों, जो हमारे शोधार्थी हैं जो इस वेबिनार में जुड़े हैं, और जो विशेषकर शिक्षक हैं, मुझे लगता है कि ये सामूहिक जिम्मेदारी है उस शोध और प्रकाशन की नैतिकता को समझने के लिए। इसके लिए जो हमारी एजेंसीज हैं, यूजीसी और जो दूसरी एजेंसीज हैं, उन्होंने क्या प्रयास किए हैं। यूजीसी ने तो बाकायदा प्रकाशन भी निकाले हैं एकेडमिक इंटीग्रिटी को लेकर के। नेक में हम सभी टीचर्स जुड़े रहते हैं, नेक की तैयारी करते हैं, नेक के जो एक्सपर्ट कमेटी है उसमें जाते हैं, वहाँ रिसर्च का बहुत बड़ा कंपोनेंट है। तो मुझे लगता है कि इस अकादमिक दुनिया में रिसर्च की इस पूरे दौर को, प्रवृत्ति को, परिवेश को बहुत गंभीरता से समझना आवश्यक है। तो अनिल जी ने पिछले कुछ दिनों में बहुत तैयारी के साथ इस विषय के बहुत सारे पक्षों को टच करने की कोशिश की है, स्पर्श करने की कोशिश की है। तो मुझे लगता है कि आपके इस विस्तृत विवेचन से हम इस शोध की नैतिकता से जुड़े हुए उन गंभीर प्रश्नों को गहराई से समझ पाएंगे, और अपना जो भी एक कार्य क्षेत्र है उसमें उनका अनुसरण करते हुए जो अपेक्षाएं समाज की, राष्ट्र की, विश्वविद्यालयों की, अकादमिक जगत की हमारे साथ है, उन अपेक्षाओं की कसौटियों पर अपने आप को खरा उतार सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अनिल जी का एक बार पुनः स्वागत करते हुए उनसे अनुरोध करूंगा कि इस विषय को जिस रूप में आप देखते हैं, आपने इस विषय को जिस तरह से गंभीरता से समझा है, तो उनके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, उसके जो विभिन्न पक्ष हैं, उनके बारे में हमारा मार्गदर्शन करें प्रोफेसर अनिल मेहता। शुक्रिया संजीव जी। आई थिंक आई एम क्लियरली ऑडिबल टू एवरीवन। मेरी आवाज आ रही है संजीव जी, क्लियर? हाँ, आ रही है, आवाज आ रही है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। प्रोफेसर संजीव भानावत, एडिटर कम्युनिकेशन टुडे। प्रोफेसर एमएन हुडा इन एब्सेंशिया, डायरेक्टर भारती विद्यापीठ। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी टीम डॉक्टर उषा साहनी, मैडम आयुषी चोपड़ा, प्रियंका सिंह जी, जयंत जी, पुष्पेंद्र जी, पृथ्वी जी, and our old and esteemed friend, Professor Rakesh Goswami ji. And dear participants who are attending this particular lecture in large number. At the outset, I am grateful to Professor Sanjeev Bhanawat for inviting me to interact with you on a very, very contemporary subject, particularly in the context of young researchers, writers, and authors.
I'm really impressed the way Professor Sanjeev Bhanawat is nowadays very actively associated with organizing virtual lectures, and he himself is a most active and vibrant person who has started his own channel and almost very regularly taking up subjects which are of everyone's interest. I'm really happy to note that this is the 125th lecture in the series. I'm really happy that Bharati Vidyapeeth and communication today in their joint collaboration are touching upon wide variety of subjects, not only relating to mass communication, but in fact, they have cut across the boundary of media education. But nowadays, they are touching upon other subjects also. प्रोफेसर भानावत एक प्रखर वक्ता हैं और जिस तरह से प्रोफेसर भानावत अपनी बात रखते हैं वो सभी को न केवल प्रभावित करती है बल्कि दिल को छूती है। मेरा उतना अच्छा अधिकार भाषा पे नहीं है जितना प्रोफेसर भानावत पर है, और ये कुछ ऐसा विषय है जिसमें कि धारा प्रवाह भाषण हो भी नहीं सकता, और शायद आज के इस चर्चा का जो उद्देश्य है वो केवल एक लेक्चर मात्र नहीं है, बल्कि इट इज मोर ऑफ एन इंफॉर्मेटिव काइंड ऑफ सेशन, एजुकेटिव काइंड ऑफ सेशन. As very rightly pointed out by Professor Bhanawat, that today the kind of researches which are being produced by various universities, the kind of research papers that we all are reading today, many of them are far from satisfactory. On various forums, we are advocating quality education and quality research as well. And unless research is qualitative in nature, unless the research is really going to give the benefits to the stakeholders, it will all be a waste of time, money, and energy. In fact, as we know that our country is having a very large infrastructural base as far as education in general and higher education in particular is concerned. I'm not going into the jargon of data, but we all know that as far as the number of universities are concerned, it has already crossed 1,000. Number of colleges spread throughout the country in thousands. And again, number of PhDs which are being produced, that is really, really amazing. In fact, it is not the number that is important. Of course, we have touched a very impressive number. But as far as the quality is concerned, whether it is teaching, research, and publication is concerned, I think still it is very much important that time has come that we should focus more on quality instead of quantity or the number. So, while interacting with Professor Bhanawat, we thought it appropriate that we should deliberate upon something on research and publication ethics.
maybe a good number of participants are from perhaps from South or from the Northeast also. So I'll be bilingual in my presentation, and I'll share my presentation also with you so that you can focus. वर्चुअल एजुकेशन की वर्चुअल प्रोग्राम्स की एक लिमिटेशन ये होती है कि यदि सिर्फ लेक्चर या भाषण होता है तो कई बार कंसंट्रेट करना बड़ा मुश्किल होता है। अभी पिछले सेशन में ही जो एक सेशन था दैट इज गिवन बाय डॉक्टर आरती चोपड़ा, जिसमें कि आर्ट ऑफ लिसनिंग, बट लिसनिंग हैज इट्स ओन लिमिटेशन अनलेस इट इज सप्लीमेंटेड बाय सम विजुअल एड्स. So I think these visual aids will be quite helpful to concentrate and to remember many of the issues that we are going to discuss. So just bear with me and let me share my presentation also with you. Just a minute, please. Bhanav Saab, it is visible to everyone? Presentation visible, hai na? It's visible. Okay, thank you. So the topic for today's lecture is research and publication ethics. As you all know that ethics is part of philosophy, it's a branch of philosophy, which is more concerned with certain norms, certain code of conducts, certain values in our day-to-day life, in our personal and professional life. What is right? What is wrong? What is good and what is bad? I think ethics provide us a lot of insights about the way we should behave in our personal and professional lives. As you find here, that basically ethics are certain set of rules and model principles, or we can say that govern our personal behavior or the conducting of an activity. When we talk about the research, certainly there are certain norms, certain codes or certain rules. They are the general guidelines, and every researcher is responsible to follow these guidelines. In fact, these research guidelines educates and monitors the way researchers are conducting their research so that they can maintain high ethical standards. In fact, research ethics is closely related to the ethical principles of social responsibility. After all, for whom we are doing the research? Obviously, the answer is for the society. And when we are doing the research for society, for certain stakeholders, then it is our pious responsibility that we should be utmost honest in carrying out our research in a manner so that we can produce some authentic and reliable contribution and fulfill our responsibility towards society very well. Now, why research is so important? In fact, whether we should follow the ethical norms or not, it is not an option. Rather, I would say it is a compulsion, because ethics in research promote expansion of the knowledge. It supports the collaborative research. How can you collaborate with other person? How the institutions can collaborate with each other unless they are assured of the ethical behavior and ethical practices by their respective collaborators. In fact, ethics are very important
to protect data anonymity of the subject, and certainly it is very important to establish trust-based relationship with the respondents. Similarly, ethics really is helpful in protecting the participants' rights and welfare, and to reduce the risk of physical and psychological discomfort, damage, or the threats appearing because of research procedures. Similarly, it is very important for the researchers to protect the rights of the researchers so that researchers could be carried out in a very lawful manner, and certainly good ethical practices means good research, and ultimately it will enhance the goodwill of the research institutions also. In fact, it's very much essential to follow the ethical norms if you want to get your research published in very prestigious journal. In fact, good ethical practices in research means that we are truly accountable for our research towards the society. And similarly, when we are stick to our ethical norms, it will improve the trust of the society as researcher, and certainly it will support and improve the moral and social value. If you are ethical in your research, certainly it will influence the other aspects of life. Perhaps your practices, your deed will be ethical in other dimensions of life as well. Now, as far as the research ethics is concerned, broadly speaking, these research ethics can be classified into three important principles. Number one, principle of beneficence. It means that research should give most of the benefits to its stakeholders or the beneficiaries. There should not be any maleficence, that is, the respondents or the society should not face any adverse or harmful effect of the research. And similarly, the right to protection from the exploitation also, as far as the respondents are concerned, and those who are going to influence by the research, they should not face any harmful effects of the research. Research we are not doing for our self-interest or self-motto, but ultimately, as already pointed out, that it should give benefit to the society at large. Secondly, during research, we should respect the human dignity. We should give the right to self-determination, whether to become participant in the entire research process or not. It should be the sole discretion of the respondent. We cannot force, we should not compel the respondent to respond. And similarly, before conducting any kind of research in any discipline, it is the right of the respondent to know about the details of the research. So obviously, there should be full disclosure of the objectives and purpose of the research, possible risks, as well as the benefits of the research. And the third important principle is, that is principle of justice, means that all the participants in the research process, the respondent should be treated at par. There should be fair treatment, and similarly, there should be right of privacy. It is understood, it is a code of conduct that whatever the personal information is concerned, it will not be shared, it will not be made public. Of course, in a consolidated, in a compiled way, you can share, but it is expected that whatever the respondent is sharing honestly about his personal views, it will not be made public individually.
So these are the three important principles which perhaps are very important as far as the adherence to the research is concerned. I'll repeat once again: principle of beneficence, principle of respect of human dignity, and principle of justice. Now, in order to implement these three principles, now what are the important guidelines as far as the research ethics is concerned? In fact, the first important aspect which we are focusing right from the very beginning, that researcher must be very honest in terms of collection of information or data collection, in terms of uh, interpretation, in terms of research analysis, in terms of results, etc. So obviously, honesty is the first and the most important part as far as the research is concerned. In fact, during the various aspects of research, it is the pious duty of a researcher to follow the honesty. I rightly said that the honesty is the best policy. In fact, it applies to the research also. That is, honesty is the only policy that pays rich dividends in the long term, and research is no exception to it. Secondly, researcher should not be biased. Researcher must carry research in a very objective manner. Sometimes some agencies do funding for the research, and they expect that while conducting the research, the data be manipulated in such a way so that it gives some favor to the funding agency. Sometimes the researchers are having their own personal biasness, prejudiceness, or their own thinking. If you are not objective enough, then perhaps the very purpose of the research will be defeated in that case. So the researcher must be very impartial while carrying the research. Whatever the results might be, it should be very objective, whether it matches your own ideologies or background or thought or not. Secondly, researchers should pay utmost attention about every minute detail, because everything may influence your research results. So researcher must be very careful while conducting the research. Small deviations from perhaps the norms are not tolerated as far as the research is concerned. Integrity is very important, which is a broad word. In fact, whatever the objectives might be, whatever might be we are preaching, there should not be difference between what we are preaching and what we are practicing. So obviously, integrity will lead to trust. That is very important. It means that right from the very beginning, there will not be any mismatch between the preaching and the practice, and you will be adhering to the agreement or the assurance which you have given to the researcher or the institutions. Then it is not merely important that we should conduct the research for our maybe for our motto, for maybe for just obtaining degree or just to obtain finance, because research has no meaning unless the results are really communicated to the stakeholders, maybe professionals, maybe industry, maybe policy maker. So whatever the results might be, they must be communicated to the stakeholders. Similarly, researcher must respect the intellectual property or the IPR rules, whether it is patent, whether it is copyright or the other laws. So we should not violate the intellectual property. We'll be discussing at length about this aspect later on also when we'll be talking about the plagiarism, etc. Then confidentiality, as already mentioned in the one of the principles, that
confidentiality must be maintained. In fact, whatever is being assured to the respondent, because respondents have already disclosed whatever they felt and whatever personal information they have. So it is understood that confidentiality must be maintained. Apart from this, there are certain information, maybe in industry, maybe in government, maybe relating to the national security, maybe some trade secrets. So respondents must be assured of that whatever they have shared, it will be kept confidential, and at least it will not be used against them or against any stakeholders. There should be, yeah, there should be, Sanjeev ji, you have कुछ कह रहे हैं बीच नहीं, आप कंटिन्यू कीजिए, कोई कुछ नहीं कह रहा, कंटिन्यू में? कीजिए. Openness. Similarly, it is very much required that researcher must be quite transparent, quite open. If any clarification, any doubts are raised by the respondents or by any agency, researcher must not hide the intentions, the objectives, and everything should be clarified. So researcher must be quite transparent. Similarly, it is a responsibility, particularly for we educators who have done a lot of work, a lot of researches, a lot of projects, that it is our responsibility to develop second line of leader researcher also. It means that as a researcher, it is my duty to educate, to provide counseling, to do mentoring of young researcher or those who are doing the researches. I should, in whatever manner I could extend help to them, I should provide necessary mentoring or education to them. Then certainly it is also an ethical issue that if I'm not competent enough, if I'm not keeping myself updated with the latest advances which are taking place in the field of research, if I'm not aware about the research tools, then perhaps how can it be expected from me that I'll be able to do the quality research? So what is most important is that I should keep myself updated with the latest advances which are taking which are taking place in the field of research particularly. So never stop learning, keep on learning on an ongoing, continuing basis, and research is no exception to it. Then, of course, animal care is a different subject, but of course, it is our ethical duty that we should not do such kind of research where perhaps it may adversely affect the animals also. So obviously, unnecessary research should be stopped, and as far as possible, perhaps we should take utmost care about the animals also. And then legality, I think no compromise. Of course, the word ethics is much, much wider or bigger than the law. So obviously, it is a very small part, but in any case, whatever the prevailing laws are, we should not compromise with them. So these are some of the important guidelines as far as the research ethics is concerned. When we talk about the publication ethics, as you know that publication is the most common contemporary form of research as far as the dissemination of our knowledge or research outcome is concerned. In fact, researchers are and will always remain honor of the published work. If you are making it public, it doesn't mean that you have lost your ownership. You will always be honor of that research. So as far as possible, we must publish our researches and the results. Of course, the form may be different. It may be in the form of article. It may be in the form of books. It may be in the form of the conference proceedings, book chapters, etc. But certainly, while publishing our research, we must adhere to the ethical aspects also. In fact, when we talk about the publication ethics particularly, in fact, again, there are
certain stakeholders and certain members involved in the publication. Of course, the authors, the researchers, the journal editors or the editorial staff, similarly, the peer reviewers, the publishers, everyone is involved in the publication and certain ethical rules and guidelines are there as far as this publication part is concerned. Now, three aspects need special attention as far as the publications are concerned. The first is the authorship and contribution. Number two, conflict of interest. And number three, publication misconduct. They are the very important dimension as far as the research and its publication are concerned. And particularly the publication misconduct is very, very important from the ethical point of view. So let's talk about them one by one in detail. In fact, what is this research misconduct is concerned? In fact, misconduct is the violation of the standard codes of scholarly conduct and ethical behavior in the publication of research. So when we are violating the standard codes, when our conduct is unethical, it means that we are involved in the research misconduct. And certainly it involves fabrication, falsification, or plagiarism in proposing, performing, and reviewing research or in reporting the research results. So let's talk about them one by one. But before that, in fact, as far as the research misconduct is concerned, what is research misconduct happens? When we talk about fabrication or falsification or plagiarism, then why it happens? Sometimes what happens that because of the academic pressure, as we know that particularly in the academics, promotions are based on your research work, and promotions are time bound also. If you want to get the senior scale or the selection scale, or say to become associate professor or professor, you have less time, and certainly you have to publish more research papers and articles. Then because of that academic career pressure, sometimes the researchers, the teachers do that misconduct. Similarly, the publication pressure, as already mentioned, that in the perhaps in the process of increasing the number, sometimes the ethical aspects are violated. Sometimes we want to gain the finance also. As you know that there are nowadays number of funding agencies. So obviously, in order to complete more and more projects in a short span of time and to earn more, sometimes again, there are tendencies of research misconduct. And similarly, there is an inability to determine what is right and what is wrong. Sometimes unintentionally, there might be some research misconduct as well. Now, whether it is intentional or unintentional, but presently there might be serious repercussion of perhaps misconduct or not adhering to the ethical norms. Obviously, if it is detected or revealed or disclosed later on that there is some misconduct in research, then perhaps it may have a very serious repercussion and could mean the end of a career of a researcher. We'll be talking later on about that. There might be some serious repercussion if your research work comes under the high similarity, then sometimes there might be possibility of cancellation of your research or withdraw of the research project as well. Similarly, there are instances where
because of the plagiarism, the faculty has been dismissed. There are a number of cases, and at this forum, we don't want to share personally, but most of us know that at various level, faculties have been dismissed, even at the senior level, because of the misconduct. Similarly, rejection of the research grants. Similarly, the researchers and the academicians can be blacklisted, and in such case, in future, no prestigious publisher will be accepting their research papers. And certainly, the most important thing is that if it is detected that you have involved in a misconduct, then it will damage your entire reputation. So certainly the repercussion is very serious, and that's why it is responsibility of an academician researcher to take utmost care about the fair conduct. And certainly there are certain problems, as already mentioned, that it is quite difficult sometimes to recognize that it is just like a domestic violence. We know that some problem is there, but it is quite difficult to detect that what is going on inside. And certainly it undermines the public trust in research, and it certainly corrupts the scientific records and lead to false conclusion, which may have a very, very serious implications from the perspective of the users of that particular research. In fact, what research conduct includes? Research misconduct includes, number one, ordinary errors, good faith difference in interpretation or judgment of data. In fact, they are not included. Other, I would say that they are not included. If the error is quite routine one, it is relating with your personal thinking. There might be some faith about certain ideology, good faith, personal or professional opinion. Your opinion may differ, which you can mention in your research, and certainly private moral or ethical behavior or views. So they are not included as far as the misconduct is concerned. Now, how to measure or maintain the research ethics? There are some general guidelines to measure or maintain the research ethics. Number one, develop a clear-cut research plan. Right from the very initial stage of planning, we should decide a detailed plan of action about what, when, how, who, and where of the research. And whatever action plan has been prepared, we should just move according to the plan. And at the planning stage, we should take utmost care that we may not be involving ourselves in any kind of misconduct. Similarly, whatever the protocols have been decided by the institution where we are working, we will be following that ethical protocol also. Similarly, when two or more authors and researchers are working, then they will be deciding themselves that what will be the mode of their authorship, how they are going to conduct the research. In fact, they should follow the approval protocols also. When the research papers are sent for publication, then there are certain protocol as far as the time is concerned, as far as the methods is concerned. So we'll be following that protocol. Gain consent. That's also important, that whether we have gained the consent right from the research stage to the publication stage or not. Then we will be involving the community at large and regularly checking the data, etc. also. So these are some of the measures through which we can maintain the research ethics as well as the publication ethics. Now, I was talking about the fabrication of research. In fact, it's a very serious kind of research fraud, I would say, where the researchers, I would say virtually that they are just cooking the data. They are the false data.
So here we are inventing the data and information, and then on that basis, we are drawing certain inferences. So obviously, it is a big academic fraud when we are not circulating the questionnaire, when we are getting the questionnaires just filling up from our family, friends, or relatives who are not the true respondent of for our research. And certainly, sometimes these fabricated documents will find in the medical diaries, particularly in the medical research also. So that's a very, very serious kind of uh, uh, misconduct, and it comes under very unethical behavior. Secondly, falsification. It is the practice of manipulating research material, equipment, or process, or changing or obtaining data or results such that the research is not accurately represented in the research record. So, in order to prove our hypothesis or our assumption, when we are manipulating the research process, research data, when we are interpreting in a way that really suits us, then again, it is not an objective research, it is falsification of research, another serious misconduct. And as already mentioned, that the intention here is to improve the results or uh, removing the results that do not fit with the hypothesis. And the third and the most important is plagiarism. In fact, plagiarism means an act of academic dishonesty and a breach of ethics. It involves using someone else's idea of work as one's own, जिसको हम बोलते हैं कि साहित्य की या किसी और के शोध की तरह से इट इज जस्ट स्टीलिंग और साहित्य की एक तरह से चोरी है एंड अगेन दैट इज अगेन ए वेरी सीरियस काइंड ऑफ मिसकंडक्ट. It also includes data plagiarism and self-plagiarism as well. So when we are just using the data collected by someone else, using our name, or when we are just using our published work, which has perhaps we have already published, then it is a self-plagiarism. Similarly, plagiarism is not merely confined to just cut and paste, but in the present technological changes, perhaps the definition of plagiarism is also changing. Like Chat GPT, if we are using, again, it's a sort of plagiarism because we are not using our own ideas, our own thoughts. So obviously, plagiarism is always based on a wrongful appropriation and stealing and publication of another author's language, thoughts, ideas or expressions, and the expression of them as our own original work. So when the work is not original, when we are using the thoughts, ideas, language, or anything without acknowledging that person, it's a sort of plagiarism. In fact, four important elements present as far as the plagiarism is concerned. Number one, the unattributed use of words, text, ideas, or illustration created by someone else other than the author listed. The failure to credit the original author in a manner appropriate to the communication. The statement that the plagiarist is the original author where he or she is not. The failure to obtain the original author's consent without the consent of the researcher or the other author, we are using his or her material. So obviously they are, or any of these may be individually or collectively constitute the plagiarism. In fact, there are some common type of plagiarism in the writing. Number one, the ghostwriter. In fact, you are just taking the entire text or the material of other without even acknowledging it. So it is nothing but it is ghostwriting. Then photocopy writer. You are not verbatim copy
but you have taken substantial part without acknowledging the real author, then it is a photocopy writer. So obviously, maybe you have used your own language, but the idea you have stolen from someone else. Then it is photocopy writer. Then put back paper writer, put back paper writer, where what you have done is that you have simply compiled the researchers of two or more studies, and then you are just compiling it and writing a paper in your own name without acknowledging them. And then self-stealer writer, where you are using your own research paper, which you have already published. You are using the same data, same inferences, but putting it in a different uh, name or from different angle. Then again, it's a sort of plagiarism. So obviously, we can say that this plagiarism includes copying, patchwork plagiarism, paraphrasing plagiarism. So in copying, you are completely copying the work. In patchwork, in between what you are writing, you are taking the material from other sources without acknowledging them. Paraphrasing plagiarism. In order to avoid that plagiarism, if you are writing on your own, but you have stolen the idea of others, then again, it is a sort of plagiarism. And maybe it may not be perhaps caught by any software, but ultimately, from ethical point of view, it is a plagiarism. And sometimes unintentional plagiarism, it may also happen that you forgot to acknowledge. Of course, it was not your intention, but you forgot to acknowledge some concepts or the quotation that you have used. So whatever the kind of plagiarism is, it will be coming under the definition of plagiarism. There are certain plagiarism detection software nowadays available. And nowadays, institution of higher learning and universities have made it mandatory for the research scholars to get their plagiarism checked. And for that, number of softwares are available today, like Turnitin, or it can be Orkund or EV or then site or cross-check or WAPI fund or WAPI check, word check, etc. But out of all these two software, that is Turnitin and Orkundas, quite popular nowadays. But again, these softwares are having their own limitations also. In fact, if you use two software, even in that case, there might be variations in the similarity percentage. And similarly, if you are not using the English and submitting your thesis in some other language, then sometimes the software may not work in that case. In fact, as far as the similarity rules are concerned, again, university have different norms and but certainly similarity check perhaps exclude what all quoted work either falling under public domain or reproduced with all necessary permissions and attribution. All references, bibliography, table of content, preface, and acknowledgement. So sometimes it is asked that what this similarity or these software exclude. All these aspects are excluded. So it means that they will not be the part of your similarity percentage. All small similarities of minor nature and all generative terms, law, standard symbols, and standards equations, etc. So they are excluded as far as the plagiarism check is concerned. And certainly, as I've already mentioned, that as far as the tolerance limit is concerned, again, it varies from institution to institution. But as a general rule, it varies from 10% to 30%. So before submission of thesis, the students must check with their respective institution that
what level of plagiarism is tolerable. But in any case, we should try to keep similarity or plagiarism as low as minimum. The reason is that in spite of our best efforts, it would be very difficult to keep it maybe 0% because there are certain aspects which are to be taken. But in any case, if you have taken anything from any source, never forget to cite it to acknowledge the researchers or the authors. As far as we can say that this tolerance policy is concerned, obviously, in any case, the core work carried out by the student, faculty, staff, and the researcher shall be based on the original idea and shall be covered by zero tolerance policy on plagiarism. And as far as this zero plagiarism is concerned, particularly abstract, summary, hypothesis, observation, results, conclusions, and recommendation. In fact, they are the core area where perhaps no plagiarism will be tolerated. In fact, as per the guidelines of the UGC and many other institutions, perhaps as far as the similarity level is concerned, again, there are certain guidelines. In fact, similarity up to 10% is excluded. Again, there are certain level, that is level 1, that is similarities above, it is above, not about, above 10% to 40%. Level 2, similarities above 40 to 60%, and level 3, similarities above 60%. As already mentioned, that as far as the similarity is concerned, again, there are certain deviations and variations. But if we just assume that if the similarity is up to 10%, that will always be excluded. So it means that it will not come under the ethical issues. So here, what is important is that in order to avoid that plagiarism, there are certain guidelines. So every single instance of using phrases and ideas that are not your own must be acknowledged by giving the name of the person who first expressed every concept or thought that which is mentioned in your text part. So even you are writing your own language, but if you have taken any concept, then never forget to acknowledge the original originator of that concept. When some works are directly quoted, always place them word in quotation marks. Because if it is in the form of quotation, if it is in the form of some block or box, then perhaps the software will always exclude it. So quotations permissible, but it must be in inverted comma and acknowledge the person also. Similarly, here what is important is that if you are just expressing the author's words or ideas, then if you are paraphrasing it, always your own words. It is not enough simply to change the words or to substitute one or two words. Just write it in your own words so that you may not come under the purview of similarity. More lengthy material can be summarized in one's own style and language. Do not repeat the author's own words without placing them in quotation marks. As already mentioned, that if you are doing it in the quotation marks, then you will be excluded from similarity. And it is important to keep a list of full details of all the references. I think researchers should always keep full details of the researcher. The reason is that in the later stage, we may forget sometimes that who has given what or from where we have taken the quotation. So don't leave it on the last minute, but right from the very beginning, keep the full records. And then it is also important that
even if you are using to express the ideas of someone else, you must still put the source, even though you then do not have to use in quotation marks. Even in that case, perhaps you should already acknowledge. And certainly, information from the wide range of electronic sources is increasing use nowadays in academic writing and references. So obviously, they must be included in the list of sources cited in the written test. As you know that there are serious repercussions and the penalties. So obviously nowadays many institutions have started imposing certain penalties for the students as well as for the faculty members, right from the very undergraduate courses, MPhil, PhD, and for the project, if somebody is taking the project and if it is detected, then there is a provision of penalty by many institutions. For example, there are penalties for the students. What the penalties are? If the similarity above 10 to 40%, then students shall not be given any mark or credit in any case. The mark and credit will not be given, and the plagiarized script will have to be submitted in next 6 months. If the similarity level is 40 to 60%, then again it has to be resubmitted and the time will be extended to 18 months. And if the similarity above 60%, and in case of PhD, sometimes even the students will have to face the serious repercussion, and certainly in that case, there might be possibility that their registration might be cancelled. Moreover, if plagiarism is detected in case of the staff or the faculty member, then again there are certain penalties. If the similarities is between 10 to 40%, then certainly the faculty will be banned for the publication for at least 1 year. If the similarities are above 40% to 60%, then faculties will be banned or they will be debarred for next 2 years for publication. And in that case, perhaps their one increment may be stopped. So it's a very serious kind of thing. And moreover, if the similarity level is detected, which is more than 60%, then the faculty members will not be able to guide any students for 3 years, and the two increments will be stopped. And there are institutions who have terminated their faculty members if it is detected that the similarity level is above 60%. So now we can understand how serious it is that if somebody is involved in a misconduct or unethical practices in research. Now, as far as the ethical issues are concerned, it is related with the authors also. Certainly, who is an author? Truly speaking, author is one who has contributed substantially to conception and design or acquisition of data or analysis and interpretation of data, who has drafted the research paper or article and revised it critically for important intellectual context, or who has agreed to be accountable for all aspects of the research to ensure that questions relating to the accuracy or integrity of any part of the work are appropriately investigated and resolved. So whether it is a single author or joint author, perhaps these are the parameters on which you can decide the authorship. Now, who doesn't qualify as an author? In fact, if somebody is, by virtue of his contact, just acquires certain funds, and that person cannot be claimed as an author in any such publication by merely acquisition of funds. A person who is just a
just did the supervision of the work, that is not also considered as author unless he or she has contributed significantly or substantially in that particular research. And in that category, even the PhD guide cannot be an author unless that supervisor has really supervised and guided the research scholar and contributed in preparing that research paper. Minor laboratory support in case of the science research, and if somebody has provided just administrative support, and because of that, the person cannot become author. Why we are talking about this? Because there are a number of instances where such persons claim that they are author, but ethically speaking, they are not author at all. Then certainly there are certain unethical authorship practices. The first one is honorary or gift authorship. Sometimes the name of the dean or head of department is given as author, whereas he or she has no contribution, just to give him a credit or just to oblige. We are just giving his name as honorary or author. That is not an author at all, and it is unethical practice. Similarly, the guest authorship, where the person has not contributed anything, but the person is really influential enough to get that research paper published by virtue of his or connectivity with the publishers. Then the name of the person is given, and that is referred as guest authorship. That is again unethical because that person has no contribution at all in that research. Then ghost authorship, where the real author has contributed, but now the researcher is just putting his name and sending that research paper for the publication. That is ghost authorship, which is highly unethical. And then anonymous authorship, where no name is given. You have just getting the published, but even not using your name. That is the anonymous authorship. You are just trying to just spread your ideas or your thoughts. That is again an unethical practice. Or sometimes the fictitious names are given. That is again not tolerable. Then nowadays a new term is now coined, that is salami publication. Sometimes what happens that in order to increase the number of publications, the researchers try to just subtract or divide the same research into different pieces, and then they submit that work to the different publishers. So out of one research, when you are just slicing it, making it part, whereas the research work is one, then it is referred as salami publication. And that is basically what you are doing is that you are just have just conducted one research and now unnecessary taking the credit by publishing various articles and research papers or submitting them for the multiple publication. That is also unethical. Now, as far as the publication is concerned, again, there are certain unethical practices. Number one, multiple submission. As we know that nowadays there is a tendency that publishers take a lot of time in sending their acceptance, or even in the case of publication, it takes 1 or 2 years. But sometimes the researchers become quite impatient, and the same research paper is just sent to 2 or 3 journals for publication. And incidentally, they get the acceptance and the same paper is published by 2 or more publishers. So multiple submission is unethical unless you get the rejection from one journal. You should not send it for the publication to the another. Then multiple publication, as already mentioned, that the same paper, by just changing the name
with the same content you are just sending to the different journal for publication, again, it is unethical. Then sometimes suggesting the potential reviewers also who can give the feedback in your favor, just suggesting the uh, journal editors that these are some of the potential reviews, and then you just try to influence the reviewers who will not be giving the objective review report. That is again an unethical practice. And then again, it is expected that if there is any kind of error, maybe minor error, then it must be brought into notice the publisher immediately. Otherwise, again, it will be an unethical practice. Then the pedantry journal. In fact, pedantry journals basically are substandard journals. What is happening is nowadays that the publishers are making it a commercial venture. They want to earn profits, and in that process, they compromise with the quality. There are duplications of the prestigious journals also. So one should be very, very cautious and careful about these predatory journals. So if the journal is being published not to promote the academics, but just to make a money, when they are not having any concern with the quality, and when they are unable to follow the minimum accepted standards of the, and where the publishers are doing some fake advertisement or fake claiming about their indexing, when they are advertising that just send your research papers and we'll be publishing it within 2 months or 3 months. So one should be very, very cautious and careful while sending, because even if you publish your research papers or your project in these predatory journals, you will not get any weightage out of it. So how to know about these fake journals? As far as the fake journals are concerned, it is quite difficult to detect, but even in some cases, what you find that their websites are quite unstructured with lot of errors. We'll find lot of advertisements of these fake journal publishers to attract the authors. Whenever you find that prompt publisher is promised, if you send the article, the acceptance is assured, then perhaps it is an indicator of that fake journal or the predatory journal. And if the journal is not having any policy about the open access, proper security, and digital platform, so whatever the minimum securities are concerned, DOI numbers are concerned, if it is not available, then again it's a fake journal. And similarly, asking the manuscript handling charges, sometimes even very low amount to attract the number of authors. Of course, even in US and in many countries, there are journals who are asking some amount for publication. So one should be very, very cautious which is the genuine journal or which is the fake journal, but normally the predatory and the fake journals always ask the money. So, and many of the journals are not indexed and they are claiming it. So researchers should be very, very cautious about their publication. On the part of the publishers, they are the unethical practices, but on the part of the researchers also, perhaps if they are sending their research paper knowingly that it is a predatory journal, then again, it is an unethical practice. As far as the conflict of interest is concerned, one of the points that I discussed was that the researcher must be very, very objective in conducting the research as well as in the publication of research. If you are assured of sufficient honorarium, if your article is published in a particular journal, if there is a conflict of interest, suppose you are a reviewer, but the author is your close friend or the person from your department. If your personal interest is clashing because you want to get some gain or advantage, and if you are just
manipulating the results or interpretation of that research, then it is highly unethical. So one should take utmost care about all these issues. Maybe sometimes ethical practices are a bit difficult to follow, but if you have made that kind of mindset from the very beginning that you will stick or adhere to the ethical practices, it might be challenging, it might be difficult, but certainly the dividends, the rewards will be rich in the long term. I already mentioned that if you want to get it published in the prestigious journal, then you will have to adhere to the ethical practices always. In fact, ethical practices are very much concerned with your inner conscience, because once you are deviating from the ethical practices in publication, it may influence your other dimensions of your life also. So that's why ethics is very important. I think ethics in academics, ethics in research, they will lead to good quality in research, good quality education. It will be beneficial to the stakeholders, and above all, you will get lot of satisfaction that you have not deceived anyone, you have not deceived yourself, and that is the great satisfaction that you will get out of it. So I think it's a very, very extensive topic, but within a short span of time, I've tried to do justice with the subject. Now it's your turn to ask any question, any comment. So thank you very much. Questions, comments, if any? अनिल जी बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ क्वेश्चंस हैं चैट बॉक्स में। आप बताते जाइएगा प्लीज। एक रिधि कपूर, उन्होंने पूछा है, प्लीज टेल व्हाट इज द ओवरलैपिंग पब्लिकेशंस। Yes, as far as the overlapping publications are concerned, they are nothing but whenever you are using your own text, your own material, which you have used elsewhere, it is nothing but your self-plagiarism, and that must be avoided in your research. So avoid that overlapping publication. And secondly, I mentioned in the second or third last slide that whenever you are just sending the same article by slightly changing your title or the content of your research paper and getting it published elsewhere, then again it's an ethical practice that should be avoided, because sooner or later it will be detected. दूसरा क्वेश्चन है रतन कुमार जी का, इज देयर एनी टूल्स टू आइडेंटिफाई अनएथिकल ऑथरशिप? As such, the tools are concerned, there are no such tools available where you can identify the unethical authorship. उसका कोई टूल अभी तक तो अवेलेबल ऐसा नहीं है, क्योंकि आप हाउ कैन यू फाइंड आउट कि दिस इज द जेन्युइन ऑथर और दिस इज द गोस्ट ऑथर और दिस इज द गेस्ट ऑथर? ये आपकी खुद की एथिकल प्रैक्टिसेस पर है कि आप ऐसी जगह अपने आप को इन्वॉल्व मत कीजिए जहां आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। ये नैतिकता की, कई बार क्या होता है कि नैतिकता बड़ी होती है, कानून छोटा होता है। आप हो सकता है कि कानूनी परिधि में आप ना आते हो, लेकिन फिर भी ये नैतिकता के बाहर है। तो ऐसे कोई सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं है कि इसमें आप पता कर सकें कि दिस ऑथर इज जेन्युइन। नहीं, लेकिन यदि आप परीक्षक हैं या एक्सपर्ट के रूप में सिलेक्शन कमेटी में, तो सवाल जवाब करने से मालूम पड़ जाएगा कि वो फेक ऑथर है कि जेन्युइन ऑथर है। उस तरह के सवाल जवाब करने का मौका वैसे, क्योंकि हाँ वो तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन उसमें बहुत समय लगेगा कि कब वो सिलेक्शन कमेटी हो, कब आपको हाँ, लेकिन किसी ने अपने नंबर बढ़ाने के लिए यदि ऐसा किया है तो कभी न कभी पकड़ में आ सकता है। पकड़ में आ सकता है, लॉन्ग टर्म में आ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या है कि इमीडिएट कोई सॉफ्टवेयर अवेलेबल है तो सॉफ्टवेयर तो अवेलेबल, शॉर्टकट से बचने की कोशिश करें और जेन्युइन काम करें, यही इसका मंतव्य है।
यही मंतव्य है इसका। बिल्कुल। कुछ और क्वेश्चन है? क्या हिंदी एक मिनट, क्या स्कोपस जर्नल के विषय में बताएं, क्या हिंदी भाषा में लिखा जा सकता है? ये आंचल कुमारी जी ने पूछा है। मेरी जानकारी में तो स्कोपस का हिंदी भाषा में तो संजीव जी आप भी गाइड हाँ, कर मेरी सकते ख्याल नहीं है, हिंदी हैं। में नहीं नहीं है, अभी तक अंग्रेजी नहीं में है, ही है अभी वो। तक तो नहीं, अंग्रेजी में ही है सब। क्योंकि जो स्कोपस का जितना भी वो सब फॉरेन कंट्री से ही होता है, तो यहाँ अभी हिंदी भाषा में अवेलेबल नहीं है। यूजीसी केयर के जर्नल जरूर आपके हिंदी भाषा में एक और सवाल है अनिल जी। जी। nobody no nowadays there are some good journals या asking APC like या IEEE access and some या elsewhere या journals. How do we differentiate between true and fake journals through APC? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि हम फेक जर्नल्स में और जेन्युइन जर्नल्स को कैसे हम डिफरेंशिएट करें, क्योंकि एनुअल प्रोसेसिंग चार्जेज है एपीसी के फॉर्म में कई बार कुछ अच्छे जर्नल्स भी आपसे चार्ज करते हैं, तो कॉमन प्रैक्टिस है। देखिए उस केस में आपको कई आप पैरामीटर्स आपके हो सकते हैं। यदि उस पब्लिशर के पुराने अगर इश्यूज अवेलेबल हैं, आर्काइव्स अवेलेबल हैं, मे बी आपकी लाइब्रेरी में या वेबसाइट, मान लीजिए कम्युनिकेशन टुडे एक हमारा जर्नल है, इसके जर्नल्स प्रोफेसर भानावत ने अपनी वेबसाइट पर डाल रखे हैं। ऐसे ही जो अच्छी जर्नल्स हैं उनके आपको पुराने इश्यूज आपको मिल जाएंगे। आप देखिए क्वालिटी ऑफ रिसर्च पेपर्स उनके किस तरह के हैं, और क्या वो रेगुलरली पब्लिश हो रहा है या नहीं, नंबर वन। अच्छा, उस जर्नल के पब्लिशर कौन है? कभी कभी मान लीजिए बहुत अच्छे जो पब्लिशर्स हैं, तो उन पब्लिशर के नाम से भी आप ये डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि ये फेक जर्नल है या जेन्युइन जर्नल है। इसके अलावा एडिटोरियल बोर्ड में कौन लोग हैं और एडिटर कौन है, दैट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके अलावा जो आपके जो पीयर जो रिव्यू कमेटी, कई बार जर्नल्स में आपको रिव्यू कमेटी के सबके नाम आपको मिल जाते हैं, तो आप ये देख लीजिएगा कि उस जर्नल के साथ जो रिव्यूअर्स है या जो लोग जुड़े हुए हैं वो लोग कौन है, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किस तरह के रिसर्च पेपर्स उस जर्नल में पब्लिश हुए हैं, आपको उस जर्नल के फॉर्मेट और गेटअप को देख के भी आपको आइडिया हो जाएगा कि जर्नल एक क्वालिटी जर्नल है या नहीं। और अगर वो जर्नल एक इंडेक्स जर्नल है जिसका जो इम्पैक्ट फैक्टर है, जो दूसरे पैरामीटर्स हैं अच्छे हैं, तो आप इस बात पर आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि इट्स नॉट ए फेक और पेडिटरी जर्नल, इट्स ए जेन्युइन जर्नल। तो बड़ी सावधानी के साथ आपको अपने विषय में चुनना होगा कि इट्स ए, मतलब जो पैरामीटर्स हैं थोड़ा सा आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो आपको आइडिया से हो जाएगा कि इट्स ए फेक जर्नल या इट्स ए। एक और सवाल है अनिल जी, ए गुड स्पिरिचुअलिस्ट कुड बी एन एथिकल रिसर्चर। स्पिरिचुअलिस्ट की क्या, इज ए जेन्युइन स्पिरिचुअलिस्ट? इफ इज ए जेन्युइन एंड गुड, कभी कभी जो स्पिरिचुअल है वो खाली दिखाने के लिए होती है, लेकिन अगर वास्तव में जेन्युइन है और निश्चित तौर पर आपके व्यक्तित्व का और आपके गुणों का प्रभाव कहीं ना कहीं आपके कार्य पर और आचरण पर पड़ता है, तो निश्चित तौर पर इफ इज ए ट्रू एंड जेन्युइन पर्सन एंड इज ए स्पिरिचुअलिस्ट, it will influence. If he is a researcher also, so it will influence his research practice also. तो मेरा ये मानना है कि अगर व्यक्ति में अगर नैतिकता है और जीवन के अलग अलग आयामों में उसका जो व्यवहार है, उसकी जो प्रतिष्ठा है वो अच्छी है, तो इस बात की प्रबल संभावनाएं हैं कि रिसर्च के फील्ड में भी वो शायद जेन्युइन ही होगा। एक सवाल अनिल जी, इफ वी हैव मोर देन 3 ऑथर्स अप टू 6, या who will get the benefits of ownership of the papers? देखिए एज ए गाइडलाइन ऐसा होता है कि जो फर्स्ट ऑथर है, फर्स्ट ऑथर को सबसे ज्यादा उसमें बेनिफिट मिलता है, दैट इज अराउंड 60 to 70%। जो सेकंड थर्ड जो और ऑथर्स होंगे उनका वेटेज रिलेटिवली कम होगा। वेटेज तो होगा बट फर्स्ट ऑथर विल ऑलवेज गेट द मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ। Please give inputs on the cloned journals. क्लोन जर्नल और ये जो हम बात कर रहे थे फेक जर्नल, ये लगभग एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। तो जो बातें हमने अभी बात कही है उसी को आप क्लोन जर्नल की, क्योंकि आप क्लोन जर्नल में आप यही कर रहे हैं कि आप रेप्लिकेशन कर रहे हैं किसी प्रेस्टिजियस जर्नल का, मे बी जो नाम है वो मिलता जुलता है, या दैट इज नॉट ए जेन्युइन जर्नल। तो द फेक जर्नल एंड द क्लोन जर्नल दे आर ऑलमोस्ट वन एंड द सेम। अगला एक सवाल और है, इफ फेक रिसर्च इज कॉट
Legal Yeah. action can be taken or not. Certainly, certainly. If you are using, then there is a copyright issue. There is other IPR issues also. Certainly, in that act also, in Copyright Act, certainly action can be taken by the publisher as well as by the author as well. So one should be very very cautious कि जब ये आप कॉपी करते हैं, हम तो एथिक्स में बात कर रहे हैं, लेकिन उसके लीगल रिपरकेशन जैसा आपने बताया डेफिनेटली होंगे. यदि किसी ने अगर लीगल नोटिस दे दिया है, किसी ने सूट फाइल कर लिया, देन यू विल हैव टू फेस द कंसीक्वेंसेस आल्सो. एक और सवाल है, इज यूजीसी केयर जर्नल हैज मोर वेटेज आर स्कोपस इंडेक्स्ड? देखिए, यहाँ तक सवाल वेटेज का है, इवन जो यूजीसी हैज कैप्ड, as you know that there are two kind of category A and category B. फोर टाइप्स A B C D. हाँ, ABCD तो है ही, बट आपका जो स्कोपस है या ABDC है वो A में है. हाँ. हाँ, वो तो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है. तो हम्म. समझता हूँ कि उस कंटेक्स्ट में अगर आपका रिसर्च पेपर स्कोपस में, दैट कैरीज मोर वेटेज. Does AI also affect the research ethics? Yes, certainly AI is now comparatively a new area, and certainly often I say that AI is a good servant but very, very, very poor master. So as far as the academics is concerned, we can always take the help of AI, but certainly whatever you are using, maybe in Chat GPT or other, they are again subject to the copyright also, and you cannot replicate the same content in your research paper. So ultimately, what is important for every researcher is his or her own language command also. So don't try to just copy or replicate whatever is available through AI. अनिल जी, दो सवाल और एआई पे ही हैं. ये अनीता खंडेलवाल जी और दीप्ति प्रिया. देर आर सो मेनी एआई टूल्स अवेलेबल टुडे, आर दे एथिकल टू यूज टू सम एक्सटेंट? और इसी से जुड़ा हुआ और आपकी आवाज नहीं आ रही. दो सवाल हैं हाँ. अनीता खंडेलवाल जी और दीप्ति प्रिया के. हम्म. देर आर सो मेनी एआई टूल्स अवेलेबल टुडे, आर दे एथिकल टू यूज टू सम एक्सटेंट? और दूसरा सवाल एआई से जुड़ा हुआ है, इज देयर एनी गाइडलाइंस फॉर द यूज ऑफ एआई इन रिसर्च? यस, जो आपका पहला सवाल है कि आर दे यूजफुल फॉर द रिसर्च, certainly you can use AI for maybe to just enhance your knowledge. You can certainly take AI to help to develop certain models, but mind it, you should be very very cautious and careful that AI cannot substitute and should not substitute your own originality. AI की हम सहायता ले सकते हैं, लेकिन AI से आए हुए परिणामों को हूबहू अपने पब्लिकेशंस में, रिसर्च में इम्प्लीमेंट करना एथिकल नहीं होगा, लेकिन सहायता अवश्य ली जा सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं. सेकंड सवाल क्या था संजीव जी? इज देयर एनी गाइडलाइंस फॉर द यूज ऑफ एआई इन रिसर्च? ये हमने अभी यही बात की है हमने कि ऐसे कोई गाइडलाइंस तो इस बारे में नहीं है, लेकिन फिर भी हमें अपनी रिसर्च में मौलिकता का पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एआई आपको लगभग एक तरह का ही परिणाम देगा, और कहीं ना कहीं आपको, क्योंकि व्हाट एआई डज एज फार एज द चैट जीपीटी, वो भी जो इंफॉर्मेशन या एनालिसिस कंपाइल करता है, that is part of some website, some Google, some analysis, which is already available in clouds or in some website. So one should be very, very cautious and careful. And of course, आप उसको पढ़िए, आप उसको समझिए, आप उसका उपयोग कीजिए, लेकिन फिर भी अपनी भाषा में अपने तरीके से उस चीज को आप स्पष्ट करने की आप भरसक चेष्टा कीजिए. एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है सोनिया गुप्ता जी का. डज वेबिनार सर्टिफिकेट्स हेल्प अस इन एकेडमिक स्कोर व्हाइल अप्लाइंग फॉर द जॉब? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. मैं ये तो नहीं कहता कि आप कहीं जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जब आपसे कहा जाए कि आपने कितने सेमिनार्स आपने अटेंड किए हैं और आप जाके जो आपके जो 10 वेबिनार आपने अटेंड किए हैं, आप 10 सर्टिफिकेट दिखा दें,
तो शायद वो एक तरह से क्वेश्चन बेल हो जाता है। तो आई थिंक इट शुड बी ब्लेंडिंग, लाइक रिसर्च पेपर्स अगर आपके सारे एक ही जर्नल में, देन अगेन कोई डाउट क्रिएट करते हैं। कोशिश कीजिएगा कि आपके जो रिसर्च पेपर्स जो आप पब्लिश कर रहे हैं वो अलग अलग जर्नल्स में करें। इसी तरह से मान लीजिए आपने सारी वेबिनार्स के जो आपके सर्टिफिकेट है वो कम्युनिकेशन टुडे या भारतीय विद्यापीठ के हैं, वो भी उपयुक्त नहीं होगा। कोशिश कीजिए कि आप अलग अलग मंचों पर अलग अलग फोरम से आप जुड़े, पेपर्स प्रेजेंट नहीं करें। अनिल जी, मैं इसको इस रूप में देखता हूँ हाँ। कि जब आप वेबिनार्स अटेंड करते हैं तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स पर आपको जानकारी मिलती है। वहां आप पर तो ठीक है। सर्टिफिकेट तभी लगाएं जब आप उन विषयों पर बात करने में सक्षम हो, आ, क्योंकि एज एन अभी एक्सपर्ट हम संजीव जी जो सवाल, बहुत सारे सिलेक्शन कमेटीज में जाते हैं। जैसे ही आपने सर्टिफिकेट लगाया तो एक्सपर्ट्स को एक मौका मिल जाता है सवाल पूछने का। सवाल ये भी है संजीव जी, जैसे उन्होंने कहा कि क्या सिर्फ वेबिनार के सर्टिफिकेट हमको, मेरे ख्याल कहीं कोई स्कोरिंग में इसका वो नहीं है कि इसका सेमिनार के कोई असर सर्टिफिकेट मिल नहीं गए या वेबिनार के मिल गए। है। हाँ, इसीलिए हम जब कहते आप हैं कि जॉब में हैं, तो आप नेक का कोई प्रेजेंटेशन है वहां है तो वहां लगा दीजिए कि साहब हम इतने एक्टिव हैं, टीचिंग के साथ साथ इतनी जगह जुड़े हुए हैं। ठीक है। देखिए, एक दूसरी बात ये है कि जुड़े, आप अलग अलग जगह जुड़े, ये अच्छी बात है कि आप रेगुलरली वेबिनार्स आप पार्टिसिपेट भी करें और आप सुने भी, क्योंकि इससे आपका ज्ञान बढ़ेगा। लेकिन जहाँ तक सवाल सिलेक्शंस का है, मेरा अपना व्यक्तिगत रूप से मानना ये है कि अगर आपका पोर्टफोलियो, जिसको मैं बोल रहा हूँ, जैसे कि स्टॉक के अलग अलग पोर्टफोलियो होते हैं, अगर आपका जो पोर्टफोलियो एज ए कैंडिडेचर, वेदर इट इज सिलेक्शन और प्रमोशन, यदि आपका उसमें काफी डाइवर्सिफिकेशन है, आप अलग अलग जगह पर आपने पेपर प्रेजेंट किए हैं, अलग अलग जर्नल्स में अगर आप पब्लिश हुए हैं, आपके वेबिनार्स के भी सर्टिफिकेट हैं, आपके फिजिकल मोड के भी हैं, तो शायद आपको ज्यादा फायदा उसका मिलेगा, बजाय केवल एक ही जगह। नहीं तो ये सवाल ये है, एकेडमिक स्कोर में फायदा है क्या? मुझे लगता है एकेडमिक स्कोर नहीं में है, फायदा नहीं है अप्लाई नहीं, करने में। नहीं एकेडमिक फायदा नहीं, वो तो खैर ही वो आपके इंटरव्यूज में फर्क पड़ेगा कि आपने कितना सीखा। अटेंड किया, तो बिल्कुल सही। केवल सर्टिफिकेट इकट्ठे करने की प्रवृत्ति से आप ज्वाइन कर रहे हैं तो मेरे ख्याल इस प्रवृत्ति को अवॉइड कीजिए। कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं, अपने आप को अपडेट करना चाहते हैं, तो इनकी महत्ता है। सर्टिफिकेट एडेड एडवांटेज है। जब आप स्कूल कॉलेज में हैं, हमने बहुत सारी डिबेट्स में भाग लिया, हमने थिएटर में भाग लिया, कोई हमें जॉब में एडवांटेज नहीं मिला, लेकिन ओवरऑल पर्सनैलिटी में फर्क पड़ गया। तो इनको आप अपने व्यक्तित्व विकास, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में एक एडेड टूल के रूप में देखिए, बजाय सर्टिफिकेट इकट्ठे करने की प्रवृत्ति में। वो चाहे 1 हो चाहे 25 हो, कोई बहुत बड़ा एडवांटेज जॉब प्राप्त करने में आपको मिलेगा, मुझे संदेह है। वहां तो आपका प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट होगा, आपकी नॉलेज कितनी आप बस प्रेजेंट करते हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। वही वही महत्वपूर्ण है। तो मुझे लगता है और भी हैं शायद। दीप्ति जी ने थैंक्स कहा है, और ये उदित मल्होत्रा जी ने, इज ए रिसर्च पेपर इज रिटन बाय ए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स and supervisor name is not in author list, will that paper be counted in PhD work for second and third author? आपने बात की फ्रेंड्स की, दोबारा से मैं ये कहूंगा कि क्या आपके फ्रेंड्स का कंट्रीब्यूशन रिसर्च पेपर में है या नहीं, नंबर एक। अगर है तो ज्वाइंट रिसर्च पेपर्स हो सकते हैं, नंबर वन। सेकेंडली, कुछ पता नहीं किसी दबाव में या किसी वजह से कई बार आपको नाम देना होता है सुपरवाइजर का, दे सकते हैं, लेकिन फ्रॉम द एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू, इफ द सुपरवाइजर इज नॉट हैविंग एनी कंट्रीब्यूशन, तो फिर सुपरवाइजर्स का ये मॉरल ड्यूटी है कि अपना नाम वो ना दें। और कभी कभी कुछ इंस्टीट्यूशन ने मैंडेटरी कर रखा है कि जब तक आपके रिसर्च पेपर आपके गाइड के साथ नहीं होंगे तब तक वो काउंट नहीं होंगे, ऐसा भी कुछ जगह परिपाटी चल पड़ी है। तो ये सुपरवाइजर्स की एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दे शुड कंट्रीब्यूट इन वन वे और अदर इन जस्ट इन दैट रिसर्च और राइटिंग दैट रिसर्च पेपर। एक सवाल और है सतविंदर कौर जी का, इज रिसर्च थ्रू इग्नू इज वैलिड इन स्टेट लेवल जॉब आर टू एनहांस एकेडमिक स्कोर ओनली? आई थिंक इग्नू की जो डिग्रीज हैं दैट इज वेरी मच एक्सेप्टेबल, बिकॉज इग्नू इज ए स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी। तो आप चाहे रिसर्च करेंगे, आप पीएचडी करेंगे तो मान्य होगी किसी भी संस्थान में। चलिए, मुझे लगता है प्रश्नों की श्रृंखला अब खत्म हो गई है, और जो मित्र सर्टिफिकेट जनरेट कर रहे हैं जिनको नहीं मिला है, उसकी प्रॉब्लम जो हमारे तकनीकी इसमें विशेषज्ञ हैं जयंत जी, वो अभी सॉल्व करेंगे। इससे पहले कि अपन सर्टिफिकेट की दुनिया में चलें,
मैं जयंत जी से अनुरोध करूंगा कि आज के हमारे जो विशेषज्ञ हैं प्रोफेसर अनिल मेहता, जिन्होंने बहुत विस्तार से शोध और प्रकाशन की नैतिकता, रिसर्च एंड पब्लिकेशन एथिक्स के बहुत सारे पक्षों को बहुत विस्तार से आपके सामने समझाया, और बहुत सारी जो जिज्ञासाएं थी, मेरे ख्याल पिछले हमारे जो 125 ये जो वेबिनार्स हैं उसमें इतने अधिक सवाल कभी नहीं पूछे गए। इवन अनिल जी के जो पूर्ववर्ती सेशंस थे उनमें भी इतने सवाल नहीं आए। जो लगातार सवालों की जो बौछार हुई है, इससे लगता है कि कहीं कुछ जो वैचारिक चेतना है, कहीं आप में सीखने की जो जिज्ञासा है, केवल आप मूक श्रोता बने हुए नहीं थे और पूरा आपका पार्टिसिपेशन इसमें रहा है। तो ये हमारे लिए भी सुखद प्रतीति है कि जो हमारा लक्ष्य है कि जो रिसर्चर हैं उन तक हम पीछे पहुंचे, उस दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण सत्र रहा। और ये हमारा जो कम्युनिकेशन टुडे का जो ये फोरम है, और इवन भारतीय विद्यापीठ का भी, तो हम ये सारे जो वीडियोस हैं ये अपलोड कर रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। उसका लिंक मैंने चैट बॉक्स में शेयर किया है, और करीब हमारे 250 घंटे का उसमें करीब मटेरियल या जो कंटेंट है वो हमने इसमें अपलोड किया है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यूट्यूब चैनल आप ज्वाइन करें। जो आप नहीं सुन पाए हैं डेलिब्रेशंस, उनको भी आप अपने सुविधा से सुन सकते हैं। और एक एडवांटेज ये है कि एक ही विषय पर अलग अलग थॉट के, आज तो हमने केवल क्योंकि विषय इस तरह का था अनिल जी से ही संवाद किया है, लेकिन हमने कोशिश की है कि अलग अलग एक्सपर्ट्स को, वो राजनीति से भी है, वो थिएटर से भी है, वो फिल्मों से भी है, वो एडमिनिस्ट्रेशन आईएएस आईपीएस भी रहे हैं, टीचर्स हैं, टीचर्स में भी अलग अलग फील्ड के हैं, रेडियो टीवी डिजिटल मीडिया सबके एक्सपर्ट्स हमारे इसमें हैं। तो आपको बहुत कुछ जानने सीखने को मौका मिलेगा। तो आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और जब भी आपको समय मिले और उस जो कमेंट सेक्शन है उस पर भी कमेंट्स करके आप हमें गाइड भी कर सकते हैं कि इन विषयों पर हम संवाद करें, बातचीत करें, और इस जो ये हमारी जो शैक्षिक यात्रा है इसको हम आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल जी का ई सर्टिफिकेट, और अब जयंत जी जो ई मेमेंटो है वो भी आप शेयर कीजिए, और हम तुरंत व्हाट्सएप पे अनिल जी को ये दोनों जो है ई मेमेंटो और ये भेज देंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और Thank अब you. मैं जयंत जी से अनुरोध करूंगा कि वो भारतीय विद्यापीठ की ओर से आप सभी का आभार प्रदर्शन करें। भाई जयंत जी, जो जैसा मैंने शुरू में कहा कि आप भारतीय विद्यापीठ का स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन है, वहाँ आप अध्यापन कार्य कर रहे हैं, और बेसिकली आप तकनीक जो टेलीविजन और उसके जो और इनके यहाँ टीचिंग हो रही है उसमें जो टेक्निकल सपोर्ट है वो जयंत जी का है। और यहाँ के आने से पहले आप कॉरपोरेट की दुनिया से जुड़े हुए थे। तो मैं जयंत से अनुरोध करूंगा कि वो वोट ऑफ थैंक्स प्रपोज करें। जयंत जी। थैंक यू सो मच सर। पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मुझे मौका दिया सर यहाँ पर वोट ऑफ थैंक्स प्रस्तुत करने के लिए। और अनिल जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा हमें, और भारतीय विद्यापीठ और कम्युनिकेशन टुडे की तरफ से आपको वोट ऑफ थैंक्स। और स्पेशली आपके आज के सेशन के बाद हमें पता चला कि कितने तरीके से हम एथिकली, हम कह सकते हैं कि वॉयलेटेड हो रहे हैं आज के टाइम पर, और रिसर्च के टाइम पर भी, और ऑथर्स के लिए भी आप ने जो हमें गाइडलाइंस बताई हैं और रिसर्च एथिक्स बताए हैं, उससे हम काफी ज्यादा प्रभावित हुए और आगे भी आपको ज्वाइन करना चाहेंगे। और थैंक यू सो मच सर आगे के लिए। Thank you so much. चलिए, जयंत जी। हमारी ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद भाई अनिल जी और सारे पार्टिसिपेंट्स को, और भारतीय विद्यापीठ की पूरी तकनीकी टीम को। शुक्रिया जिन्होंने- भानव साहब, शुक्रिया जयंत जी, शुक्रिया हाँ, थैंक यू जी। बस हमारे अगले आयोजन के लिए हम सोशल मीडिया के थ्रू हमारे सारे जो मित्र हैं उन तक पहुंचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और ये सेशन यहाँ क्लोज हो रहा है।